वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू केमिस्ट्री क्लास। अब हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स and periodicity in properties. In properties, ये चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे कि इंट्रोडक्शन में हम थोड़ा बहुत इस चैप्टर के लिए या इस चैप्टर के मुताबिक जानेंगे। इंट्रोडक्शन, अगर हम देखेंगे कि जितना भी मैटर प्रेजेंट है, यानी कि जितना भी मैटर अगर हम लेंगे, यानी कि अगर हम कंपाउंड्स की बात करेंगे या मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे या किसी मिक्सचर की बात करेंगे, वो फॉर्म होता है बेसिकली किनके, मीन्स मैटर कंटेन्स एलिमेंट्स, यानी कि एटम्स की बात करते हैं हम। यहाँ पे हम बोलेंगे कि मैटर अगर हम देखेंगे वो एलिमेंट्स का बना हुआ होता है। ठीक है, अब देखो कुछ एलिमेंट्स नेटिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, कुछ एलिमेंट्स, मैंने बोला कि सम एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन देयर नेटिव फॉर्म, इन देयर नेटिव फॉर्म। एग्जाम्पल अगर हम यहां पे देखेंगे गोल्ड की, अगर गोल्ड को हम देखेंगे ये क्या होता है कि कंबाइंड फॉर्म में नहीं होता, ये अपने नेटिव फॉर्म में होता है। ठीक है, वाइल एज अगर हम मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स की बात करेंगे, दे आर इन कंबाइंड फॉर्म, इन कंबाइंड, तो कंबाइंड फॉर्म में होते हैं मोस्टली अगर हम यहां पे बोलेंगे। ठीक है, बट अगर हम कहेंगे कि सम आर रेडियो एक्टिव, सम आर रेडियो एक्टिव, जैसे यूरेनियम की बात करेंगे, एंड और अनस्टेबल, और अनस्टेबल होते हैं। ठीक है ना, बहुत ही अनस्टेबल होते हैं। ठीक, तो कंबाइनड फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ रेडियो एक्टिव होते हैं, जैसे यूरेनियम की बात करते हैं हम, और ये अनस्टेबल भी होता है। ठीक है, अगर यहां पे हम देखेंगे बाय द एंड ऑफ एटीन्थ सेंचुरी, बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी की हम बात करेंगे, देयर वाज नो केमिकल नॉलेज अबाउट दीज एलिमेंट्स, बट 18th और 19th सेंचुरी के बीच में विद द एडवांसमेंट ऑफ, but between 18th and 19th century, with the advancement of chemistry, it becomes possible to isolate various elements from combined state, combined state। अब जो ये हमारे पास एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ये दो प्रकार के, कुछ नेचुरल है
कुछ सिंथेटिक। अगर हम देखेंगे नेचुरल की बात करेंगे, अप टू 90 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स वो नेचुरल है। जो भी अब 90 के बाद, जैसे यूरेनियम के बाद जो भी आते हैं, या अगर हम बोलेंगे कि 90 और 91 और 92 तक नेचुरल है, ठीक है ना। मीन्स अगर हम यूरेनियम के बाद की करेंगे, यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो मैन मेड, मैन मेड। मीन्स इन अनदर सेंस वी कैन से सिंथेटिक। और अगर हम प्रेजेंट देखेंगे, देयर आर अबाउट 118 elements which are known so far, okay। तो अगर हम हर किसी एलिमेंट की अब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना शुरू करेंगे, it will not be easy to study individually physical and chemical properties of all elements। so इसलिए क्लासिफिकेशन क्या आई, क्लासिफिकेशन, ओके। तो साइंटिस्ट्स ने क्या काम करना शुरू किया, साइंटिस्ट्स बिगिन टू classify these elements in certain way so that it becomes easy to understand or to know the chemical or physical properties of these elements, okay। so what is the basic objective of now this classification? The basic objective of classification of elements is to retrieve information regarding these elements and their compounds in such a way so that it become easy to understand their chemical and physical properties, and that is why we are studying this chapter, that is classification of elements. That is the introduction part of this classification of elements, or why we are classifying elements, or why we use different periodic tables in coming lectures। That is the reason, क्योंकि हमें यहाँ पे ये पता होनी चाहिए कि अगर इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज मिलेंगे दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स में, क्यों ना हम क्या करेंगे, उनको एक जगह रख के या एक साइड में रख के या एक ग्रुप में रख के या एक पीरियड में रख के या किस तरीके से रख के, ताकि हमें इजियर वे बन जाए, न कि हर किसी एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी इंडिविजुअली समझने की। हम क्या करेंगे, दो तो चार या पांच या छह एलिमेंट्स लेके चलेंगे, फिर इसके बाद उनकी हम प्रॉपर्टीज को यहाँ पे अंडरस्टैंड इजिली कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।